So let's start with the fact what are the different domain specific terminologies of a Salesforce CRM. So what does it mean by the domain specific terminologies? Actually, what we are going to discuss is that what are the different kinds of the objects, what are the different terminologies of Salesforce, what are the terminologies of the CRM that you are going to see inside the Salesforce. I mean, the terminologies that we have probably, few terminologies we have discussed yesterday also. That what does it mean by the lead? What does it mean by the account? What does it mean by the contact? And what does it mean by the opportunity? So right now, I'm going to introduce you a few of the terms of a CRM, and then I'll show you that these are some of the terminologies that are present as an object inside the Salesforce CRM. Now let's understand that. So let's go with this example that let's consider one of the organization, probably the Dell Incorporation. And Dell is one of the organizations who are into the manufacturing of the electronic devices. Like probably you know this. Dell used to manufacture so many different kinds of devices like laptops and the desktop, and probably mobile phones, tab, projectors, and some other things like that. So Dell is one of the organization actually is into the manufacturing business. Then the this particular company Dell tried to they actually develop so many electronic types of products. Now let's take this as an assumption that they recently come up with a new laptop. Dell has recently launched a new laptop, and then Dell wanted this laptop should be get sold, and so many people should get it. That is one. So how does this all start? How does this all start? This is what already we have discussed this in the CRM. So it's the same thing I'm going to say. So what is the very first phase? If at all any of the organization wanted that a project should be the people should buy a product. So first of all, the people should know about that product. If you don't know it, how could you come and say that I want this product, right? So it all started with the marketing. The very first thing who actually come and brand the product is the team of marketing. A marketing team with the help of different types of campaignings and the advertisements, like the digital market, which is most popular like these days, and social media marketing also. So these are the two places probably you spend most of the time, social media. Then they could perform TV advertisement, they could perform the trade shows, events, whatever. They could, they could even give the free samples. Dell की case में nobody is going to get the free sample, and don't think like that कि आपको free मिला profit है. Probably अभी ये example मैंने क्यों किया पता है कि when I was doing my MBA, इसने हमको पढ़ाया था the instructor that who was actually with us. He told us the story about the Maggie. Maggie आज आप सभी जानते हैं कि Maggie is one of the ऐसा नूडल्स के मामले में कैसा ब्रांड है जिसको बच्चा बच्चा जानता है. There was a time in India when the Maggie has actually recently started their business. Nobody was buying this. इंडिया में सेवइयां खाई तो जाती थी, बट लेकिन मीठी सेवई खाता था. Nobody was showing the interest in वो salty type because उसका फ्लेवर अलग है ना. Maggie does something like that. People used to see that thing, but वो जानते थे कि ये कोई सेवइयां टाइप की टिप है, लेकिन ये खारी है इसमें नमक. And actually nobody has started. Maggie, it was almost about to wind up the business. आपको पता है कि मैगी एक वक्त ऐसा था जब इंडिया से वापस जाने वाला, and they decided कि नहीं, cannot sold this noodles to India. They are not, nobody is showing the interest in this. काफी नुकसान हो रहा है. So then there was अभी उस वक्त तो बहुत अच्छे से बताया था उसने यार. I forget exact names who was that particular. There was a GM of that company has decided कि अभी इतना सारा product वापस क्या लेके जाएंगे. Let's follow this as a strategy. Free samples बांट के देखते चलो. What they have done, जहाँ पे भी लोग जमा होते हैं काफी सारी shows, शो उस वक्त क्या होता था कि मॉल्स तो नहीं हुआ था, मॉल्स का कंसेप्ट ही नहीं था. But then people used to be gathered in front of these cinema theaters होते थे. और काफी सारी ऐसी जगह होती थी जैसे कि आपका गार्डन्स हुआ करते. ऐसी जगहों पे they used to perform the campaigning. I'm just telling you one of the story. इंडिया में अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, but you need to sometimes probably you need
distribute the free samples also. I'm just telling you that story. So actually, they have hired so many people, and they have hired so many chefs actually. They hired so many chefs for that. And then these chefs, they do what, the Maggi people actually used to install one of the stall, एक stall लगाते थे. Uh, the places where the people used to gather, like in front of cinema theater, in front of gardens, and some kind of like that. And then they actually prepare the Maggi, in front of them, they prepare the Maggi and they used to advertise, see how easy it is to prepare this. And people even don't know how to prepare the Maggi, Maggi जब आया था, लोगों को ये भी नहीं पता था इसको बनाते कैसे. And that is one of the reason why people were not buying that. So they used to see, this is the very simple process. You just need to boil the water, and then when the water is boiling, you just need to put this inside this, and then वो जो मसाला आता है उसको आपने add कर देना. That's the only thing you need to add. And see, in the 2 minutes, it's going to prepare. आपको आपको पता नहीं आज एडवर्टाइज होता नहीं, मैं तो खैर टीवी देखता ही नहीं हूँ ऑलमोस्टली, ये नहीं पता. बट हाँ, एक वक्त था ऐसा कि मैगी के बारे में जो ऐड आता था कि इट्स अ फूड दैट कुड बी प्रिपेयर्ड ओनली इन द 2 minutes. ऐसा एक ऐड आता था मैगी के बारे में, 2 minutes, 2 मिनट में बन जाएगा. क्या बन सकता है 2 मिनट? दैट मैगी नूडल्स कैन बी फाउंड. So if you are in a hurry and you don't have that much of the time, you can go with this option. तो इस तरह से ना ब्रांडिंग स्टार्ट हुई. they used to actually prepare this and they, और वो खिलाते थे उनको इस तरह से ना. फिर आपको पता है कि नहीं पता, आई डोंट नो. आगे के अंदर और ये जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं, दे हैव समथिंग कॉल्ड एज अजीनोमोटो. Ajinomoto is a kind of Chinese salt. It actually flavorize anything, whatever you eat. It actually flavorize, and the next time you your you wanted the same flavor. इसीलिए आपको एक आदत पड़ जाती है. इसीलिए सब चीजें नहीं खाना चाहिए. But this is the way people used to brand the products in the India में. अगर आप कोई business करना चाहते हैं तो sometime even you need to distribute the free samples. They'll तो ऐसा नहीं करेगा of course, but let's take this as an example that the very first thing, whenever we wanted a product to be get branded, very first thing is the team of marketing. These are the people, those who have different ways to perform the advertisement. They could perform it with the digital marketing, the advertisements in the TV and the videos and events and something like that. Now, what is the outcome of all these efforts? What these people will get when they perform the advertisement, what these people is going to get is the something called as lead. So marketing is a team that responsible to perform the campaign, and the outcome of the campaign is the lead. So when I was explaining this, the CRM, that time also I told the same. But let's explain this because probably you are going to get something with this topic, and that is why we are learning it once again. So what is the outcome of this all effort? The outcome is lead. What is a lead? So if you remember this, can anyone tell me, just let me give you a command to unmute yourself, because this is something which we have discussed. So now you can unmute yourself. Can anyone tell me what exactly is the lead? Because you guys say that is why I'm expecting this. Yeah, someone has given in the chat. Okay, yes, has saying yes. Yes, tell me. Then tell me what exactly it means by a lead. Anyone of let's make the session to be interactive. Yeah, yes, sir. Mm, lead is the customer which has the opportunity to convert in a customer. It is the optimistic customer that can be converted into, not as a customer, but it can be converted in a customer. Anything more, guys? कोई और कुछ बताएगा? Divya, Kiran, anything? Guys, anything on this? It has a potential, sir, that it can be converted into a customer. Cut your answer. See, lead is not exactly a customer, but lead could be a customer.
That is, lead is someone, we say that lead is a person, lead is an organization, lead is someone who has showed interest on your product. Because campaigning has been done, we have displayed the product to people, and then lead is someone who just come to you and ask you about this product. So lead is actually someone who showed the interest on your product. Now see, we cannot say that lead is exactly a customer, but it could be a potential customer. That means in the future, there are possibilities that this person, because he has been impressed and he has been interested with this product, so he could buy the same thing. Now, once he buy it, once he purchase that product, he becomes a customer. So lead is the thing which is given to the sales team. Leads are given to the sales team, and these are the people, those who try to convert the lead into actual customer, those who talk to the clients, who talk to the customers, and if they see that customer is not getting converted, so they could probably offer something. If we have an offer on this also, and if you come to buy this, I could show you this offer. ये वो लोग होते हैं जिनके पास में सेलिंग का पूरे राइट्स होता है, and they have a limit that you could offer up to this, discount वगैरह नहीं ऐसा होता है. इनके पास अलग अलग. I mean, these are the trained guys. ये guys training होता है. These are the trained people. They are very professional in in the bargaining and getting the lead to get converted as a customer. Now see, once the lead is get converted, the customers के बाद में, when whatever this customer will buy, whatever this customer will purchase, whatever the revenue is getting to be get generated with this customer. इस customer ने आज एक लैपटॉप दिया, या मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आप मान के चलिए. Let me give you one more example. What does it mean by the opportunity? Opportunity को समझने में आपको confusion नहीं होना चाहिए. That is why I'm giving you. आप देखिए ना, आप यू गो टू डिफरेंट मॉल्स, आप जाते हो सीवी मॉल, बिग बाजार में जाते हो, आप मैक्स में जाते हो, और यू गो टू द डी मार्ट. पीपल आई मीन द पीपल एट देयर काउंटर पे जो लोग होते हैं बिलिंग पे, दे आस्क यू, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आस्क यू फॉर योर मोबाइल नंबर, है ना. व्हाई? बिकॉज बेस्ड ऑन योर मोबाइल नंबर दे पुट एन एंट्री. उसमें क्या होता है कि आपका मोबाइल नंबर एंड फ्यू मोर थिंग्स लाइक दे वर आस्क. जैसे आपका नाम पूछ लिया उसने, कभी कभी नाम नहीं भी पूछते, जस्ट आस्क फॉर योर मोबाइल. सो मान के चलिए कि आप फर्स्ट टाइम यू गो टू द डीमार्ट एंड फर्स्ट टाइम आपने 5000 का बिल बनाया. वो 5000 का बिल जो है वो आपके नाम पर ऐड हो चुका है. दिस पर्सन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट has actually given us an opportunity that he has to purchase 5000 of it. So whatever the revenue that is being generated is called as a opportunity. ठीक है. अब मान के चलो आप 2 महीने बाद फिर से आप डीमार्ट जाते हो एंड यू सेकंड टाइम यू परचेस अगेन 6000. तो अब आपको 5000 प्लस 6000 यानी आपने 11000 की अपॉर्चुनिटी जनरेट कर. सो एट द एंड ऑफ द ईयर से कुछ ऑफर्स आते हैं ना, कभी कभी आपके स्पेसिफिक आपके नाम पर ऑफर्स आते हैं कि बिकॉज अराउंड द ईयर you probably have purchased about 10,000 का आपने प्रोडक्ट परचेस किया, तो we provide you on this particular line we will provide you 1%, 2%, 3% discount like that. So whatever a client, whatever a customer, how many times, and I mean he buys something with us, he buy the product with us, he becomes that particular revenue, that particular money what we have generated from him is called as opportunity. So opportunity directly relates to what? Opportunity directly relates to the revenue which is being generated from that particular customer. अब वो एक बार आया तो जितना पैसा दिया, that is also revenue, that is also opportunity. He come to the shop second time and again he purchase something, that is also the revenue. If I wanted to calculate, तो मैं देखूंगा कि ये कितनी बार इसने हमारा store visit किया and how many times he have purchased this. What are the different products he have purchased? That is also common. Then the kind of revenue, सिर्फ money की बात नहीं यहाँ पे. Kind of product what we have, he has also purchased. That also come inside the opportunity. So opportunity is actually something which relates to how many revenues we have generated, how many different products we could have been sold to that particular client, that particular customer. That is also comes into. तो ये होता है आपका opportunity. Now after the product has been delivered, we know that support team का role आता है, उसके बाद में logistic team का role आता है. कि अगर प्रोडक्ट में कोई इश्यूज आते हैं तो उसके लिए सपोर्ट टीम काम करता है ना. दे यूज टू कम एंड विजिट, प्रोबेबली साइट विजिट करते हैं या प्रोडक्ट बुलवा लेते हैं अपने एंड पे, फिर वो काम करते हैं.
This is all. This is the whole process. It's a very general process of any business, है ना? This I was. I mean, ये तो मैं explain कर रहा था एक general terminologies के हिसाब से. Now let me come to the Salesforce part. कि अगर हम Salesforce में CRM की बात करें तो CRM also probably have all this process, है ना? ये सारा process CRM में भी. And by the way, we were discussing this all in terms of CRM. हम CRM के point of view से ये सारा discussion कर. Now let's come to Salesforce CRM अब because अपने को Salesforce में जाना है तो हम Salesforce के हिसाब से अब समझते हैं. तो Salesforce में क्या होता है? This is one of the very important interview question. What really I'm going to share you this document after your batch has been confirmed to me. I'm going to share, apart from this, I actually these are running notes. These are developed during when I'm teaching. When I'm teaching you, when I'm on to particular topic, that time I used to, write down these questions. Otherwise, I have so many sets of the questions to give. Then let me show you that. Okay. Actually, when you completed this, when you completed this, I have so many things to share with you. Interview questions, what is about Jira. I have so many things actually. I have so many things. Probably I share everything with them. हर बैच के साथ सभी almost सभी को share करता. I have so many projects आपको देने हैं मुझे. Resume format, I have so many things with the resume also. Actually, I have so many things that I'm going to share you. I'm going to share you so many things. उसमें से एक ये चीज है कि during the class you are going to get this. अभी मैंने इसको अपलोड नहीं किया बिकॉज अभी आप लोगों के रजिस्ट्रेशन होने के हैं. बट वंस यू गेट रजिस्टर्ड, अभी तो इस वीकेंड तक आपका डेमो ही चल रहा है. बट आफ्टर डेमो इज ओवर, फ्राइडे विल बी द लास्ट डे फॉर दिस. आफ्टर फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, दीज आर द 3 days you need to complete the onboarding process. उसके बाद में मंडे onward we have a concrete batch. On the Monday only those will be there inside the batch, those have to their registration. Like तब मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करना स्टार्ट करूँ. So I'm going to share you this document also. This which what are the different types of Salesforce interview questions are there. तो उसमें से एक क्वेश्चन आता है. Let me show you that. What is the lead conversion process? It's generally a very important question, and they probably ask you within 2 to 3 minutes of the interview itself, because it's a kind of beginning question. है ना, कुछ questions ऐसे होते हैं जो topic में पहले पूछे जाते हैं, कुछ बाद में पूछे जाते हैं. So I probably have seen this that once your interview has been started, in the initial phase of interview itself, they ask you this question. So this is a very essential thing what we are learning right now. What is a lead conversion process, or what happens when a lead is get converted inside the Salesforce? Whenever a lead is get converted, whenever a lead is get converted, a lead is converted to what? A customer, you know this. Whenever a lead is converted inside the Salesforce, 3 records are automatically generated. 3 records are automatically generated. One of them is account record, contact record, and the opportunity record. Account contact is compulsory, optional. Opportunity is something which is optional. It depends if the annual revenue field has been. I will show you. I'll show you that. Don't worry. But you could say that चलो आप इतना नहीं भी पड़ेगा तो भी चलेगा. No. Now what you could say is that whenever a lead is converted into customer inside the Salesforce, there are 3 different records which is automatically generated. What are those records? First is account record, the second is contact record, and third is opportunity. ये बोल छोड़ दो आप, ये कंपलसरी ऑप्शन अभी छोड़ दो, आगे चल के आपको समझ में आ जाए. At least now you could say that. Now remember that this is a very essential thing what we are learning, right? आप ये इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आप, and this is probably आप देखो, आप जितने भी लोग हैं जब इंटरव्यूज होंगे तो हर 10 में से 4 लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा कि what happens when a lead is converted, या फिर दूसरी तरह से कि what is the lead conversion process the Salesforce. काफी अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ना. You just need to identify the moral of the story. क्या है, क्या पूछ रहा है ये. He's asking about what really happens when a lead is get converted as a client, as a customer inside the Salesforce. Now you need to say that whenever a lead is converted into the customer inside the Salesforce, 3 different records are generated. What are those records? One account record is generated, one contact record, and one opportunity record is generated. I'm going to show you, demonstrate you this live. So let's go to the lead object. Let me go with any of the lead probably. This is the lead. Okay, this is one of the lead. I just have created one of the lead. कैसे होता है सब बात? If you see there's a button called as convert. This is the manual conversion. We are going to see the automatic conversions also. Okay, but yeah, अभी fact को समझने के लिए manual conversion is more than enough. So this is one of the lead. Name of the lead is test trigger record number 1. This is the name. And right now you can see I am onto this particular tab. I'm onto this particular tab. मैं कहाँ पर हूँ अभी? I'm onto this particular tab. ठीक है.
Let me now show you if I press this button convert, if I convert this, okay, if I convert this, so it will showing me what will be the name of account, what will be the name of opportunity, what will be the name of contact is going to be get created. Okay, it's showing me that. Okay, okay. With all these details, if I'm agree, they see there's a button do not create a new opportunity. That is why I was saying if you click this button, creation of opportunity will be stopped. So I was telling this, the creation of opportunity is optional. It's really on your hand. But चलो अभी उसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं ना, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे. Although there is a checkbox, and if you click this checkbox for this, अभी जब मैं इसको convert कर दूंगा, opportunity will not going to get generated. But मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ. I wanted account contact and opportunity to be get generated. So मैं क्या कर रहा हूँ? I'm just unchecking this. So opportunity को generate करना या नहीं करना, that is something which is in our hand. Okay, and so this was the reason, guys, I have written that opportunity generation is something which is optional. लेकिन आप अभी ये चक्करों में मत पड़ो. I straight forward मैं कहता हूँ आपसे कि आप बस ये याद रखो कि जैसे लीड कन्वर्ट होता है, 3 रिकॉर्ड जनरेट होते हैं, अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड अपॉर्चुनिटी. आई एम गोइंग टू शो यू दैट. अभी तक मैं लीड पर ही. लेट मी नाउ प्रेस दिस बटन. Closed. Please enter the value of facts and subject. So this wanted me to enter some of the values. So give the subject. Let me now try to put this PCM title. Let's complete once again. I need to make some of the modifications. Yeah, facts की value compulsory is asking me to enter the value of facts. That save this. Let me once again try to convert. There are few values that are actually subject, lead conversion process, priority is normal, date is did not started, those converted है, उसको status को change कर देते, attracted, anything in phone, I'll also the phone values and by title, banking. Yeah, I think this much is sufficient. Yeah, कुछ डेटा है जो रिक्वायर्ड रहता है कन्वर्शन में, वो डेटा नहीं था इसमें. नाउ लेट मी ट्राई टू कन्वर्ट दिस वंस अगेन. सो मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ. लेट मी एंटर द सब्जेक्ट. We enter today's date. Priority is normal, not started, everything. Try with something. It's yours to try it. Okay. Let me try with this account. Okay. This is one of the lead record. See. Patricia. Okay. Patricia Fezzer. This is one of the lead record. Let me now try to convert this lead. I'm giving a subject. I'm giving today's date, and let me now try to convert this. Just have validation error on the account. Please select the industry. Validation rules लगा रखे हैं. ठीक है, ठीक है, industry. बैंक. ये क्या होते हैं वैलिडेशन रूल्स, ये सब क्या होते हैं ट्रिगर्स, आप सब पढ़ने वाले हो. सो डोंट वरी अबाउट दैट. दिस इज नॉट अ, अब ये मत सोचो कि ये कुछ एरर है. एक्चुअली दिस इज द काइंड ऑफ ऑटोमेशन व्हाट वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड. बिकॉज ये जो नोट ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये पुरानी बैच का है और उसमें सारे रूल्स पढ़े जा चुके हैं, सारे रूल्स लगाए जा चुके हैं. दैट इज व्हाई इट इज एक्चुअली स्टॉपिंग अस. तो ये वही है जो हमने क्रिएट किया है. सो डोंट थिंक लाइक दैट कि ये क्या हो रहा है. ये कुछ ऐसा है ऑटोमेशन जो मैंने ही क्रिएट करके रखा है, एंड दैट इज व्हाई इट्स स्टॉपिंग मी. ये चीज जरूरी है, ये चीज जरूरी है. Without this, you cannot control. This is validation on. Please enter the website. 3 चीजें हैं, account, website मुझे create करना. I created this. Let me show you that. Why it's showing me the error. I got this point. Why it's showing me the error. Actually, I have done this navigation. Let me show you that. मैंने ये खुद ही बना रखा है ये. See, I created this. आप देख रहे हो? Please select the industry. Please select the enter the value of the facts. Please enter the value of website. This is something what I have created, and that is why it is showing me the error. ये जो अभी आपको error आया, please enter the value of facts and everything. Facts है यहाँ पे,
What are the things that are required? Industry होना चाहिए, facts होना चाहिए और website होना चाहिए. This is a code what I have created. ये मेरा ही बनाया हुआ code. That is why it's stopping me to do the same thing. Okay. ऐसा मत सोचो कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है. कोड ऐसा है जो मैंने ही बनाया है. That is why वेबसाइट का वैल्यू होना चाहिए, फैक्स का वैल्यू होना चाहिए, and it should have the value of industry. ठीक है, तीनों चीजें होनी चाहिए. तो इंडस्ट्री है, फैक्स है, and website है. If these values are not there, it will not won't create a record. So this is something called as validation. है ना, ये आप पढ़ने वाले, don't worry. You are going to learn that also. This is a code what I have created. You're also going to learn the same thing. Let me now save this. So now this is a lead. No, this is a lead with the name called as Patricia Fezer. And Patricia Fezer's ka ye record hai. This is one of the lead. Patricia is a kind of person, and she has actually showed interest in a product. So one of the lead record against the name of Patricia, Miss Patricia Fezer, has been generated. Now this is the record of Patricia. Okay, this is kind of lead record. This lead record has been given to our sales team. Sales team has contacted Patricia on this particular phone and number, and then they have talked to her. Now she is ready to buy the product, and probably she has buy. Now, because Patricia has actually converted in the client, Patricia is agree to buy something. Now we shall convert this lead. Now Patricia is no more a lead because she becomes a she becomes a customer. It should be, हमको lead से उसका record हटाना पड़ता है. So because she becomes a customer now, तो उसके लिए I need to convert this. Now see, as soon as I convert this record, as soon as I convert this record, what happens? Let me show that. Now see, the conversion process has been started. So first of all, आप lead से हट चुके हो. Now you are into the account. You are into the account, है ना? तो Patricia was like, Patricia का record जो था वो convert हो चुका है. किसमें convert हो चुका है? Into the account. From the lead, the record is get converted into the account. This is the account record. This is the account record that is being generated for the lead of Patricia. Patricia के लिए ये record बना है. And the second thing, what we have seen over here is that first thing is that one of the account record is created. Second, with the name of Patricia Fezer, this kind of notification generated whenever you convert a lead. Okay. So second is a contact record is generated. And the third is when opportunities also get generated. So these are the three things, whenever a lead get converted. Now this is now you can show this, see this. Whenever a lead is converted, three records are generated. The first is account. The second is contact with the name of Patricia. And third is opportunity, what she had bought. Patricia is actually has something with the International Shipping Corporation. I mean, this was the company for which Patricia was associated, and she had bought something from there. So these are the things, these are the things. So this is now you could understand. I showed you this as a live. Okay, whenever a lead is converted, now if you try to find, if you go to the lead record, let me show you that also. You go to the lead record, and if you at all try to find out the record of Patricia, you try to get the record of Patricia, there will be no record of this. Why? Because it has been shifted from lead to some other object. अगर आप यहाँ ढूंढने की कोशिश करोगे ना, आपको नहीं मिलेगा. Because अब वो lead है ही नहीं. Patricia is no more a lead now, and that is why you cannot find the record of Patricia over here. अब देखो मैं P की list में, but I don't find the name of Patricia. Why? Because Patricia is no more a lead. Patricia becomes a customer. If it's a customer, then there will be an account record. But finding the details of the customer, we need to go with the accounts and the contacts and the opportunity. Probably if have some revenue has been generated, then we need to go to the opportunity, otherwise not. But at least you could find the same in the contacts and the opportunity, accounts and the contact. You won't find it inside the lead. So this is the thing. So whenever a lead is converted, make it absolutely clear now. This is one of the interview question, और ये सब कैसे होता है आप बनाने वाले, डोंट वरी. अभी कैसा है, दिस आई एम हैविंग सो मेनी ऑर्ग्स फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए मैं आई क्रिएटेड सो मेनी ऑर्ग्स. तो इसमें मैंने एक वैलिडेशन रूल लगा रखा है. व्हेनेवर अ न्यू अकाउंट रिकॉर्ड इज, आप ये पढ़ने वाले हो कि व्हेनेवर अ न्यू अकाउंट में अगर कुछ भी नया जनरेट होगा, या अकाउंट में अगर कोई भी रिकॉर्ड जनरेट होगा, मैंने एक रूल लगा रखा था. जो एरर्स हमको आ रहे थे, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ट्रिगर. Trigger is a kind of code that stops you, that puts you validation before insert. अकाउंट पे मैंने एक अकाउंट, अभी क्या हो रहा था, आपने देखा कि लीड कन्वर्ट होकर अकाउंट पे जा रहा था, लेकिन अकाउंट पे जाने से पहले इंडस्ट्री फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए. तो इंडस्ट्री ब्लैंक है तो एक मैसेज आ रहा था, प्लीज सिलेक्ट द इंडस्ट्री. अगर फैक्स ब्लैंक है तो एक मैसेज आता है, प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ द फैक्स.
अगर वेबसाइट ब्लैंक है तो प्लीज एंटर द वैल्यू। अगर इसके बजाय अगर आप ये एंटर नहीं करोगे, यू वोंट बी एबल टू स्टोर द वैल्यू इनसाइड द अकाउंट। तो ये कैसा है देखो, यहाँ से मैं क्या दिखाना चाहता हूँ। इवन यू कुड डिसाइड द सेम थिंग, आप ये पूरा सीआरएम को कस्टमाइज कर सकते हो। कल भी हमारी ये बात निकली थी कि इफ यू डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट्स, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे हायरिंग मैनेजर पोजीशन, कैंडिडेट बुक, लोन, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर नॉट, ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, बट स्टिल देयर आर सो मेनी ऑब्जेक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट ओवर देयर। ठीक है ना, कोई बात नहीं, यू कैन क्रिएट इट। पहली चीज सिंपल आंसर, वन लाइन आंसर जो नहीं आप क्रिएट कर सकते। नाउ विद दिस ऑल ये कुछ स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इवन आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे लीड कन्वर्ट होता है, अकाउंट में जाता है, अकाउंट्स और कॉन्टैक्ट और अपॉर्चुनिटी। तो अगर आप चाहते हो कि जब अकाउंट में कोई डेटा आ रहा है एंड यू वांटेड सम ऑफ द फील्ड शुड बी देयर, तो इवन यू कुड कस्टमाइज दैट आल्सो। ये इतना इतना कस्टमाइजेबल। तो ये क्या है, दिस इज समथिंग व्हिच इज एडिशनल बिहेवियर एंड दैट इज व्हाट वी ऑप्टेन इन द डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट कितना होता है, डेवलपमेंट सिर्फ 30%, 20% होता है। सी, दिस इज एट ऑल अ कोड, दिस इज एट ऑल अ, ये एक अलग कोड है, ये एक अलग कोड। भाई आज क्योंकि अगर कितना कोड किया है मैंने फॉर दिस ऑपरेशन, what I have coded up to this only. This is my code. और यही सेम चीज अगर मैं जावा में बना रहा होता ना, तो ये कम से कम जो है ना 35-36 प्रोबेबली 40 लाइन का कोड है। अपेक्स में ना इट्स अ मैटर ऑफ हार्डली 10 to 15 लाइन्स। कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आप लॉजिक बनाओ, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक आप बनाओ, इट विल बी जस्ट 10 to 15। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखो ना यहाँ पे, तो इस कोड में और इस कोड में कोई फर्क नहीं, सिवाय एक चीज के, वो है आपका फील्ड का नाम। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखो उसको, ऐसे मुझे पता है भी कोडिंग नहीं पढ़ाना है मुझे आप, लेकिन और जब कोडिंग पढ़ाता हूँ तो यही चीजें रिपीट करता हूँ मैं। एक्चुअली कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, ताकि आप भी वही प्रोसेस फॉलो करो और आपको समझे कि ये इतना सारा कोड मैंने कैसे लिखा है। जस्ट कॉपी दिस और पेस्ट किया, उसके बाद में जहाँ इंडस्ट्री थी उसको फैक्स से रिप्लेस कर दी, जहाँ जहाँ इंडस्ट्री थी उसको फैक्स से रिप्लेस कर दी, दैट्स इट। तो इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, जहाँ फैक्स था वहाँ वेबसाइट पेस्ट कर दी। तो एक्चुअली मैंने कितना कोड लिखा है, सही मानों में सिर्फ इतना ही कोड। सही मानों में अगर मैं आपसे पूछूं तो मैंने सिर्फ इतना कोड लिखा है बस, यहाँ से यहाँ तक। बाकी ये नीचे का जितना भी मैंने ऑब्टेन किया वो कॉपी करके पेस्ट किया है। और मैंने कुल मिला के क्या चेंज किया इसमें, इंडस्ट्री की वो चेंज करके फैक्स लिखा कि यहाँ पे इंडस्ट्री का कोड है ये, कि इंडस्ट्री फील्ड में डेटा होना चाहिए, फैक्स में होना चाहिए, वेबसाइट और भी कोई फील्ड ऐड कर सकता हूँ मैं, आप जितनी चाहे उतनी ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, आई कुड ऐड एनीथिंग ओवर हियर। जस्ट गिव मी 1 minute टू शो दिस। मैं यहाँ पे कोई भी एक फील्ड ऐड कर सकता हूँ, आई कुड ऐड एनीथिंग, acc डॉट यू कुड ऐड एनीथिंग ओवर वेबसाइट का। जैसे अगर आप यू गो टू अकाउंट, अकाउंट में कोई ऐसी फील्ड जिसको आप बनाना चाहते हो, टाइप, ठीक है, एसीसी टाइप, ऐसा, दैट्स इट। एसीसी टाइप शुड नॉट व्हाटएवर आप चाहे तो ये भी फील्ड ऐड कर सकते हो। दिस इज व्हाट यू कैन, एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली, दिस इज हाउ वी एक्चुअली। कोडिंग कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो आप ये पूरा सीआरएम कस्टमाइजेबल है, ये समझ लो आप। पूरा सीआरएम आप बिल्कुल अपने हिसाब से, अपने बिजनेस रिक्वायर, अपने क्लाइंट के हिसाब से इसको रन कर सकते हैं। ये एक रीजन है, ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से सेल्सफोर्स सीआरएम जो है नंबर वन क्यों माना जाता है, बिकॉज इट इज फुल्ली कस्टमाइजेबल। आपकी जैसी भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस की, है ना, आपके क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है, आप उसको कंपलसरी कर सकते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक चीज जो अभी आपको अच्छा हुआ, ये चीज आप एरर्स आया तो कुछ अच्छा होता, टास्क अच्छे होते हैं, आइटम्स होते हैं। ये एरर आया तो मैं आपको ये एक आगे जाके ये एक चीज समझा पाया, चीज बता पाया। अगर ये एरर नहीं आता तो बात डिस्कशन यही की यही रह जाती। तो आपने देखा कि भले ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड चीजें हैं, ये वो है जो मैंने बनाया, बट दीज आर द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। इवन वी कैन चेंज द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आल्सो, आप स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं, एंड यू कैन डिजाइन द फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट्स नीड। तो दिस व्हाट हैपेंस गाइस। अब वापस आते हैं स्टोरी पे। स्टोरी ये है कि व्हाट रियली हैपेंस व्हेन अ लीड इज गेट कन्वर्टेड। Whenever a lead is converted, three things are generated. Three records are generated: an account record, one contact record, and one opportunity. So whenever a lead is generated, whenever a lead is converted into the customer inside the Salesforce, three things are generated: account, contact, and opportunity. Now, why the generation of opportunity is optional? Now you also know that there is a checkbox for that. If you wanted to skip this part, then you need to click. If you click, opportunity is not going to get generated. ठीक है, तो आप चाहें तो ये भी बता सकते हैं, इट्स नॉट नाउ डिपेंड्स ऑन टू, आप कितना आंसर देना चाहते हो आपके ऊपर छोड़ दिया मैं। बट यस, दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज द आंसर। Now what really there is inside the account count, what is there inside the contact and opportunity, ठीक है, तो we will going to have a discussion regarding this, don't worry। अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने कोई फायदा नहीं है, because we are going to see the in the practicals we are going to understand this, okay। चलो हम देखने वाले हैं।
How many objects are there inside the Salesforce? ये discussion में मैं ले चुका हूँ. There are so many objects. I have showed you that. If you remember, मैंने पहले आपको ये चीज यहाँ से दिखाया कि देखो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं. फिर मैंने कहा if you are not satisfied, let me show you from here. Let me show you from here. फिर मैंने ये लिस्ट एक्सपैंड करी और यहाँ से बताया. फिर मैंने बताया कि चलो अगर इतने भी आपको लग रहे हैं कि ये भी कम है तो फिर हमने किया है, डिस्कशन किया है. तो I'll show you something. Let's go to the developer console part. है ना, डेवलपर कंसोल पे ले जाके आपको मैंने सारी ऑब्जेक्ट्स दिखा दिया था. तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर देयर? इफ यू वांटेड टू सी, देयर आर 2 to 3 ways. और ये आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट्स. दीज मेनी आर द ऑब्जेक्ट्स. ये सारी ऑब्जेक्ट्स हैं ना, दीज मेनी आर द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेल्सफोर्स. तो ये हम देख चुके हैं, सो डोंट वरी, इसके ऊपर फिर से डिस्कशन नहीं करता. But whatever the terminology that you have learned so far, probably you have understand what it's mean by the campaign and the leads and what is account, what is contact, what is opportunity, cases, solution. So your these many other terminologies of a normal CRM, and these are the objects inside the Salesforce. So your Salesforce have compatible objects. मतलब एक बिजनेस में जो टर्म होता है, जैसे एक बिजनेस में टर्म होता है प्राइस, है ना, एक नॉर्मल सा टर्म. कोट, आप कोई प्रोडक्ट के ऊपर कितना कोट कर, अगर एक प्राइस बुक नाम का टर्म, तो प्राइस बुक इज आल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट, वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द सेल्सफोर्स. तो सेल्सफोर्स की जो ऑब्जेक्ट है ना, दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर टू योर बिजनेस टर्मिनोलॉजी. एक नॉर्मल बिजनेस में जो टर्म्स यूज होती है ना, उससे काफी हद तक सिमिलर है. जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म होता है. कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो लोग आपस में बैठ के क्या एग्रीमेंट बनाते हैं, अपन उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. फीडबैक देखो आप, और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं. आप अगर मतलब ये ऑब्जर्व करो, आप ये ऑब्जर्व करो कि सेल्सफोर्स की ऑब्जेक्ट के नाम कैसे हैं. कहीं ना कहीं आप पाओगे कि एक नॉर्मल बिजनेस में जो टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, दे आर वेरी सिमिलर, दे आर वेरी सिमिलर. नोट्स, कॉन्टैक्ट्स, अकाउंट्स, लीड, एक्टिविटीज, सोशल मीडिया, फोरकास्ट, कोड्स, कॉल सेंटर्स, एंटाइटलमेंट, चैट, मैक्रोस, कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, प्राइस बुक, प्रोडक्ट्स इज ऑल्सो सॉल्यूशंस, पार्टनर्स, आइडियाज, आंसर्स, एसेट, यूजर. आई जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड मैं क्या फैक्ट पे लेके आ रहा हूँ आपको, कि आप देखिए, आप नोटिस करिए, आप गौर करिए कि एक नॉर्मल बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो होती हैं, एक नॉर्मल बिजनेस में जो टर्म्स यूज होती हैं, जो वोकैबुलरीज यूज होती है, नाउ दीज आर सिमिलर, वेरी सिमिलर इन द Salesforce. And the things that are not present in the Salesforce, you have this facility that you can create them, and you can even customize everything inside the Salesforce is fully customizable. बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी. SAP में ऐसा नहीं होता है, SAP में ऐसा नहीं होता. और probably अगर कोई मिल जाए आपको SAP वाला and you ask this, और अगर कभी डिस्कशन निकले तो आपको पता चलेगा कि SAP में ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली मैंने SAP नहीं पढ़ा है, लेकिन मेरी कंपनी में SAP भी है. I have the friends from their domain also. We used to have discussion, चलता रहता है आपस में, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते रहते हैं. अभी दो वकील मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, दो डॉक्टर्स मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, हम तो क्या बोल सकते हैं आपस में. या तो अपनी मतलब बीवियों की बुराइयां करेंगे, या फिर यही करेंगे, यही है ना, क्या होता है तुम्हारे इसमें, क्या होता है हमारे इसमें, क्या होता है. दिस इज ऑल वी हैव डिस्कशन. तो आई केम टू नो दैट इन लोग के इसमें कस्टमाइजेशन बहुत कम. देन आई से अरे सेल्सफोर्स में तो यार ऐसा भी, हाँ ऐसा भी होता है. जैसे अभी मैंने आपको अकाउंट ऑब्जेक्ट पे ट्रिगर्स बताया कि अकाउंट वैसे तो एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है, so it is something which is being given to us from the sales, but even I can make, even I can put some of the tools over there. मैं उसमें भी कोई रूल डाल सकता हूँ विद द ट्रिगर्स. जो अभी मैंने कोड बताया, आपने देखा कि अगर मैं अकाउंट रिकॉर्ड पे जाऊं और कुछ नया स्टोर करना चाहता हूँ, इफ आई एट ऑल वांटेड टू स्टोर समथिंग, अभी ऐसे दिखने में तो यहाँ दिख रहा है कि यही फील्ड मैंडेटरी, जो लाल है ना, इसका मतलब होता है यही फील्ड मैंडेटरी है. बाकी सारी फील्ड्स अगर अपन देखें तो बाकी सारी फील्ड पे कहीं ऐसा है नहीं, मतलब यही एक फील्ड मैंडेटरी है. ठीक है, आई ट्राई विथ समथिंग, ठीक है, सैंपल टेस्ट अकाउंट, सैंपल न्यू अकाउंट, है ना, बस मैं इतनी एंटिटी डालता हूँ. लेट मी शो यू दैट. सिर्फ इतनी एंटिटी डालता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डालता. एंड लेट मी ट्राई टू सेव दिस. देखो आपको एरर्स आए, क्या एरर आ रहा है. सबसे पहले आपको इंडस्ट्री भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी, आपको फैक्स भी सिलेक्ट करना पड़ेगा, वेबसाइट. अब ये किसने किया, ये तो हम ही ने बनाया. नाउ वी हैव कस्टमाइज दिस ऑपरेशन. ये सब चीजें सेल्सफोर्स की ये फ्लेक्सिबिलिटी. तो ये जब ऐसा डिस्कशन में आया तो पता चला कि इनके में ऐसा कुछ भी नहीं. दीज आर वेरी रिजिड, जो है उसी में कस्टमाइज करना पड़ता है आपको. यू नीड टू थिंक, यू नीड टू अप्लाई योर लॉजिक कि इसको कैसा बना. यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जो चाहिए वो मिल जाए. तो दीज आर सम ऑफ द गुड रीजंस व्हाई यू आर कमिंग टू द सेल्सफोर्स सीआरएम. चलिए नेक्स्ट वी हैव दिस डिस्कशन. आज ले लेते हैं इसको, बिकॉज़ दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग डिस्कशन, थोड़ा लंबा जाने वाला है. आज से स्टार्ट कर देते हैं इसको. What are the different types of cloud services that are being offered by the Salesforce? This is also one of the interview question.
इस सेल्सफोर्स में कौन कौन से क्लाउड्स रहते हैं? सो what are the different types of cloud services? Okay, what are the different cloud services that is being offered? See, Salesforce mainly started with the two clouds only, sales and the service. Mainly it started with only cloud. जब Salesforce start हुआ था in the year of 1999, it was started only with the two clouds. धीरे धीरे gradually ना Salesforce grow होता गया, even आज भी grow. आप ये नहीं समझना कि आज जितने clouds है उतने ही रहेंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं. I tell you one thing, Salesforce में recently अभी नए clouds add हुए, health cloud add हुआ है, NPS cloud add और आपका एजुकेशन क्लाउड ऐड और प्रोबेबली इन द कमिंग फ्यूचर देखो आज आप कुछ पढ़ रहे हो, आप जब आप लाइव हो जाओगे ना आगे चल के, यू विल केम टू नो कि एक नया क्लाउड और आ गया है, बिकॉज सेल्सफोर्स बिलीव सेल्सफोर्स जो है ना, इट्स एक्चुअली डेवलपिंग डे बाय डे, हर बार डेवलप होता है एंड सेल्सफोर्स इज एडिंग, सेल्सफोर्स नई नई फंक्शनलिटीज ऐड करता जा रहा है. सो दैट इज व्हाई यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी. जब हेल्थ क्लाउड ऐड हुआ है तो आपने हेल्थ क्लाउड पढ़ लेना चाहिए. अभी मुझे तो फॉर्चुनेटली एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका मिल गया है. तब एक क्लाइंट है जिसके लिए अभी हेल्थ क्लाउड पे काम है. सो मैं आई स्टार्टेड लर्निंग हेल्थ क्लाउड, पढ़ लिया मैंने हेल्थ क्लाउड बिकॉज. तो ऐसा ऐसा ना आप समझो, सेल्सफोर्स इटसेल्फ ऐड सम न्यू थिंग्स एवरी ईयर. हर साल, हर महीने, 3 महीने, 5 महीने में कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है. तो यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, आप वो पढ़ लो, आप आगे बढ़ जाओ ऐसे. तो सेल्सफोर्स इज कीप एक्सपैंडिंग. सेल्सफोर्स का जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होते जा रहा है. इनिशियली व्हेन सेल्सफोर्स वाज स्टार्टेड ना, दो ही क्लाउड थे, सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड. सेल्स क्लाउड में द थिंग्स व्हाट वाज रिलेटेड ऑल टू द सेल्स टीम का जो जो काम होता है टू ऑटोमेट द प्रोसेस ऑफ सेल्स टीम, एवरीथिंग वाज देयर इनसाइड द सेल्स क्लाउड. अच्छा, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्लाउड ही ऐड होते हैं. लेट मी टेल यू, क्लाउड के अंदर अगर जैसे सेल्स क्लाउड इज देयर, सर्विस क्लाउड इज ऑलरेडी देयर, तो ये मत समझो कि ये फुल्ली डेवलप है, नहीं. सेल्सफोर्स कैसा है कि अगर कोई नई फंक्शनैलिटी है जो सर्विस क्लाउड पे नहीं है या सेल्स क्लाउड पे नहीं है, तो वो फंक्शनैलिटी ऐड कर लेगा. तो योर इवन द क्लाउड्स आर आल्सो एक्सपैंडिंग. एक तो सेल्सफोर्स खुद एक्सपैंड हो रहा है, it's introducing the new clouds, new clouds every time. And moreover, अगर कोई फंक्शनैलिटी है जो एग्जिस्टिंग क्लाउड पे डालनी है वो भी है, तो क्लाउड्स खुद भी एक्सपैंड हो रहे हैं. देयर आर फ्यू फंक्शनैलिटी दैट इज बीइंग एडेड इनटू द क्लाउड, वो भी एक चीज हो रहा है. तो ये एक बहुत अच्छी बात है सेल्सफोर्स की. उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बिजनेस को सपोर्ट करता है सेल्सफोर्स. और जैसे मैं बोलता हूँ ना कि फॉर एवरी बिजनेस वी हैव अ सोल्यूशन. एनर्जी के लिए हमारे पास सोल्यूशन है. आप हेल्थ सेक्टर पे वी हैव द सोल्यूशन. यू आर फ्रॉम द एजुकेशन सेक्टर, द क्लाइंट इज फ्रॉम द एजुकेशन, वी हैव अ सोल्यूशन. Client is from the power generation, we have a solution. Client is from this automobile industry, we have a solution. Client belongs to media and something like that, media as entertainment, we have a solution. Client belongs to some other sector, we have a solution. For every sector of business, Salesforce is having a solution. Why? Because वो हर अपने clouds पे, एक तो ये कि cloud increase करता है, दूसरा ये कि cloud पे existing cloud पे नई चीजें डालता है. तो सेल्स क्लाउड में नॉर्मली कौन सी चीजें आती है? द थिंग्स व्हाटएवर रिक्वायर्ड बाय द सेल्स टीम. सेल्स टीम को क्या क्या लगता है? लीड है ना, अकाउंट, अपॉर्चुनिटीज, कॉन्टैक्ट, ऑर्डर, देखा भी आप, टास्क, इवेंट, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स आल्सो. एनालिटिक्स आल्सो, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड. एनालिटिक्स बहुत जगह मिलेगा आपको. एनालिटिक्स इज अ पार्ट ऑफ सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, इवन द मार्केटिंग क्लाउड आल्सो. एनालिटिक्स जो है ना, करीब करीब ऑलमोस्ट हर क्लाउड का एक पार्ट है. आइंस्टीन क्लाउड पे भी एनालिटिक्स होता है. सर्विस क्लाउड पे अगर आप आते हो, सर्विस क्लाउड में कौन कौन सी चीजें रहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा जिसका नाम है ना, उसको वैसे ही ऑटोमेशन. मतलब द काइंड ऑफ सर्विसेज, द काइंड ऑफ थिंग्स व्हाट एवर द सेल्स टीम रिक्वायर, वो सारी ऑब्जेक्ट्स, वो सारी ऑटोमेशन कहाँ मिलेगा आपको? सेल्स क्लाउड. व्हाट एवर द सर्विस टीम रिक्वायर, सर्विस टीम मतलब क्या होता है? पोस्ट परचेस जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे आपके जो एसएलएस होते हैं, एसएलएस मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट, वारंटी और गारंटी जिसको आप बोलते हो, उसको मेंटेन करना, अकाउंट्स मेंटेन करना, केसेस मेंटेन करना, केसेस पे क्या सोल्यूशन दिया गया है, क्या फीडबैक दिया गया है, वो सब चीजें. ये सारे दीज आर द, यहाँ पे मैंने कुछ ही ऑब्जेक्ट है. ये आप ये समझो कि ये इतने ही ऑब्जेक्ट है, नहीं नहीं. आई जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड फ्यू ऑब्जेक्ट. वैसे तो सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड बहुत बड़ा है. एवरी क्लाउड इज सो बिग, उसमें बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स होती है. आई जस्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड फ्यू ऑब्जेक्ट. मैंने कुछ दिया ताकि आपको एक आइडिया मिले सेल्स क्लाउड का काम क्या है, सर्विस क्लाउड का काम क्या है, ऐसा. ठीक है. अब सर्विस क्लाउड ना बहुत बड़ा है एक्चुअली. मतलब टेक्निकली एक चीज बताऊं आपको, मैं सारे क्लाउड्स में सर्विस क्लाउड ही सबसे बड़ा. सर्विस क्लाउड पे पूरा पूरा सही मानों में कोई काम नहीं करता. जितना फीचर्स आपके प्रोजेक्ट पे रिक्वायर्ड है ना, आप उतना नहीं करते. जैसे हमने 4-5 साल काम कर रखा था, हमको थोड़ा सा आइडिया मिल गया कि सर्विस क्लाउड में कौन कौन से फीचर्स हैं, बिकॉज अलग अलग प्रोजेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है. सर्विस क्लाउड ना सबसे बड़ा क्लाउड है एक्चुअली सेल्सफोर्स. अब ये सब बेसिक चीजों के अलावा ना इसमें कुछ और नई चीजें हैं. जैसे कि इसमें एक चीज होती है नॉलेज बेस. नॉलेज बेस या फिर स्टैटिक रिसोर्सेज बोलते हैं. इसमें क्या होता है नॉर्मली, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे आप काम करने वालों से डोंट. एक्चुअली नॉलेज बेस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, कंटेंट आता है, डॉक्यूमेंट. कंटेंट तो शायद आप नहीं कर पाओगे, बट हाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट पे मैं खुद लेके जाऊंगा.
तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट या फिर कंटेंट ऑब्जेक्ट में यूजुअली क्या होता है, देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अगर आप फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो या फिर आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाते हो या इन जनरल भी आप कोई एक प्रोडक्ट की इंक्वायरी देखते हो, कभी कभी क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के साथ में उसका एक ब्राउचर भी रहता है, एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट, एक एक्सेल डॉक्यूमेंट, जो कि उसकी प्रोडक्ट की सारी स्पेसिफिकेशन बताता है कि प्रोडक्ट की ये चीजें हैं, these are the features of this product, ना, तो how it is actually been distinguished from other product। कभी कभी कंपैरिजंस रहता है कि ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये एक कार है, ये एक कार है, उसके पीछे कंपैरिजन क्या है। तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, मतलब एक प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हुए कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। तो अगर मैं इफ आई एट ऑल वांटेड टू स्टोर वो डॉक्यूमेंट, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मुझे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट स्टोर करने, आई वांट टू स्टोर द इमेजेस, कुछ नहीं तो इमेज तो रहेगा, ये तो पक्की बात है। अगर इफ आई वांटेड टू स्टोर द इमेजेस या फिर कोई वीडियो है जो उसकी बैंडिंग पे, अभी फ्लिपकार्ट पे आप देखो तो वीडियो भी मिलते हैं आपको किसी प्रोडक्ट की। तो अगर मुझे कुछ एक प्रोडक्ट के अगेंस्ट में इफ आई वांटेड टू स्टोर सम ऑफ द थिंग्स लाइक आई वांटेड टू स्टोर अ इमेज, I wanted to store audio file, video file, probably I want to store the PDF documents, Word document, PowerPoint document, या फिर आपको कोई भी Excel sheet या text document, this kind of resources, ये जितनी भी चीजें मैंने नाम लिया ना, first of all they are known as static resource। इनको static resource बोला जाता है। This is one of the terminology। ठीक है। तो now to store all this document, आप CRM पे इसको कहाँ store करो? These are the thing called as knowledge base। Knowledge base मतलब होता है कि something some additional things related to that product, तो उसको support करता है। देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स फॉर दैट, कंटेंट एंड अ डॉक्यूमेंट। तो कंटेंट तो नहीं यूज कर पाएंगे हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर, बट हाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट में आपको यूज करना सिखा दूं। क्या डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करना सिखा दूं। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सर्विस क्लाउड। लाइव एजेंट्स होते हैं सीटीआई चैनल्स बनाने में, कंप्यूटर टेलीफोनिक इंटरफेसेस चैनल्स बनाने में। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर्स ऑफ सर्विस क्लाउड। ओमनी चैनल इज ऑल्सो वन ऑफ द फीचर। ओमनी चैनल क्या होता है, इस पर डिटेल डिस्कशन चलेगा अपना आगे चल के, व्हाट डज ओमनी चैनल मीन्स। तो मैं आपको असाइनमेंट रूल्स करके एक चीज है मैं पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँ इट मीन्स बाय द ओमनी चैनल। ओमनी चैनल ये काफी बार इंटरव्यू में पूछेगा, व्हाट इट मीन्स बाय द ओमनी चैनल। आप चाहो तो गूगल कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, व्हाट इज ओमनी चैनल इन द सेल्सफोर्स एंड हाउ कैन आई क्रिएट माय ओन वेब पेज एंड वेब फोकस एंड ऑल। तो ये मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। आपका बैच बनने दो पहले, फिर मैं शेयर करूँ, काफी सारी चीजें शेयर करूँ। और याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है कि इतने टॉपिक्स करने के बाद इंटरव्यू क्वेश्चन आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज आपका दूसरा या तीसरा दिन है, आज आपको मैंने कम से कम 3 इंटरव्यू क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, सेल्सफोर्स फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ, आपके जो टॉपिक्स पढ़ रहे हो आप ये इंटरव्यू में पूछे जाए। ठीक है, तो ऐसा और ऐसे बहुत सारी चीजें होती। सर्विस क्लाउड सेल्सफोर्स का सबसे बड़ा, उसमें बहुत सारे फीचर्स, ये कुछ और फीचर्स होते हैं जो आप डिस्कस कर सकते हो इंटरव्यू। इसके बाद आता मार्केटिंग क्लाउड। तो मार्केटिंग क्लाउड कैसे स्टार्ट हुआ, तो उसके पीछे की कहानी समझो। इनिशियली मैंने कहा ना कि जब सेल्सफोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था तो 2 ही क्लाउड थे, एक था सेल्स क्लाउड और दूसरा था सर्विस क्लाउड। फिर बाद में अभी कुछ सालों के बाद, 2 साल 3 साल के बाद में सेल्सफोर्स ने रियलाइज किया कि देखिए कि वैसे भी आप सुनो कोई भी एक बिजनेस, हमने भी देखा सीआरएम की प्रोसेस में एवरीथिंग स्टार्टेड विद द मार्केटिंग। मार्केटिंग से ही सारी चीजें शुरू होती है। अगर मार्केटिंग होगी तो सेल्स होगा, सेल्स होगा तो सर्विस होगा। अब आपके पास में सॉल्यूशन है सेल्स और सर्विस के लिए, बट आप मार्केटिंग के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में लैग कर रहे हैं। सेल्सफोर्स ने आइडेंटिफाई किया इस चीज को कि हमारे पास में मार्केटिंग के लिए कुछ नहीं, वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ टूल फॉर द मार्केटिंग टू ऑटोमेट द मार्केटिंग। तो एक तो ये होता है कि आप पूरा क्लाउड फिर से डेवलप करो, सारी चीजें अपने डेवलपर्स को भिड़ा दो काम के लिए, और लेट्स अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड डेवलप द थिंग। एक तो ये तरीका है। एक दूसरी स्ट्रेटेजी और है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या है जो आईटी में बड़ी पॉपुलर है, आपने देखा होगा रिसेंटली व्हाट्सएप को टेक ओवर कर लिया फेसबुक, है ना। फेसबुक इवन एक समय था जब फेसबुक बिकने वाला था, लेकिन यार वो बिका नहीं। So, एक स्ट्रेटेजी होती है आईटी में। जब सेल्सफोर्स को मार्केटिंग क्लाउड डेवलप करना था, एक पॉसिबिलिटी थी कि पूरा क्लाउड नई तरह से बनाया जाए। उसमें काफी रिसर्च, काफी इन्वेस्टमेंट और काफी समय भी लगने वाला था। सेल्सफोर्स केम टू नो अबाउट 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट थे जो काफी पॉपुलर थे उस वक्त मार्केटिंग के लिए। एक था मार्केटो और दूसरा था एग्जैक्ट टारगेट। ये 2 प्रोडक्ट्स थे, मतलब दीज वर 2 टूल्स दैट टाइम, जो काफी पॉपुलर थे और काफी सारे लोग इसको यूज कर रहे हैं। जैसे काफी सारे लोग आज व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। व्हाट्सएप फेसबुक ने खरीद लिया, नाउ इनडायरेक्टली उससे जनरेट होने वाला सारा रेवेन्यू फेसबुक, एंड यू बिकम्स द क्लाइंट ऑफ फेसबुक। अभी एक हफ्ता पहले आपने सुना होगा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों डाउन हो गए थे 6 घंटे। जब भी ऐसा होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, उसने यूज किया, उसने यूज करके वी आर ऑन द क्लाउड, हमको इमीडिएटली हमारे सर्वर से नोटिफिकेशन आ जाता है। उससे कोई भी वेब सर्विसेज है वो काम नहीं करती।
मैंने मेरी फैमिली पे ये था, सब बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और ठीक है आप व्हाट्सएप यूज करके, अब देखो व्हाट्सएप यूज करके आपका व्हाट्सएप काम कर, ठीक है, ऐसा हो। सो आप अगर क्लाउड पे आएंगे, आप किसी कंपनी पे रहोगे, आपकी वेब सर्विसेज बनी हो, आपको इमीडिएटली सर्वर से इंटीमेशन आ जाते हैं। आउटलुक अकाउंट पे आ चुका था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप डाउन हो चुका, ठीक है। सो तो क्या हुआ कि फिर आई मीन these Salesforce people came to know about two products, कि there are two products that are most popular in the field of marketing automation. One of them was Marketo, the second was Exact. But these two products, just a second. So these two products were actually purely on premise tool. दोनों प्रोडक्ट जो थे, मार्केटो या एग्जैक्ट टारगेट, दोनों ऑन प्रीमाइस टूल। और सेल्सफोर्स डिसाइडेड कि इसमें से एग्जैक्ट टारगेट, दोनों पे स्टडी किया सेल्सफोर्स ने, देन सेल्सफोर्स डिसाइडेड कि अपन एग्जैक्ट टारगेट को टेक ओवर कर लेते हैं। तो दैट टाइम इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग एंटायर न्यू क्लाउड, सेल्सफोर्स ने क्या किया कि एग्जैक्ट टारगेट को खरीद। तो एग्जैक्ट टारगेट को खरीदने के बाद फर्स्ट ऑफ व्हाट थिंग्स व्हाट ही हैव डन, एक तो ये कि उसको ऑन प्रीमाइस टूल से ऑन क्लाउड किया, पूरा टूल कन्वर्ट किया, ठीक है, ऑन प्रीमाइस से ऑन क्लाउड पे लाया। क्लाउड पे लाने के बाद उसका नाम चेंज किया, द न्यू नेम वाज फॉर दिस एग्जैक्ट टारगेट वाज मार्केटिंग क्लाउड। अब मार्केटिंग क्लाउड में जो चीजें आती है वो आती है ईमेल स्टूडियो, मोबाइल स्टूडियो। मोबाइल तो अभी ऐड हुआ है, एसएमएस बाद में ऐड हुआ, सोशल स्टूडियोज अभी रिसेंटली, और जर्नी बिल्डर। इनिशियली इट वाज ओनली हैविंग द ईमेल स्टूडियो था उस टाइम जब ये लिया गया था। विद द ईमेल स्टूडियो व्हाट यू कैन डू इज दैट आप यू कैन सेंड थाउजेंड्स ऑफ द ईमेल। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी जीमेल अकाउंट से कितने ईमेल भेज सकते हो एक दिन, किसी को पता है क्या ये चीज? आपके जीमेल अकाउंट से हाउ मेनी ईमेल दैट यू कैन सेंड इन वन डे? किसी को आइडिया है क्या इस चीज का? जो ईमेल अकाउंट होता है आपका, इफ यू ट्राई टू सेंड दिस ईमेल, ऐसे कंपोज करूं मैं, हाउ मेनी ईमेल्स आई कुड सेंड इन वन डे विद दिस? कितने ईमेल आईडीज में भेज सकता हूँ यहाँ, कितनी ईमेल आईडीज ऐड कर सकता हूँ, एंड देन इन सीसी एंड देन दिस इज, चलो नहीं पर कोई बात नहीं, probably you know it's 50 50 50 150 email IDs that you could add. Someone is giving me the answer. Nikita, your network is lagging. So it's actually 150, you know, it's actually 150 max you can do. अब अगर सोचो मुझे आई नीड टू, यू नो, 15,000 लोगों को एक ईमेल चाहिए, तो क्या मैं उसको 15,000 टाइम में भेजूंगा? ऑब्वियसली नहीं, है ना, मुझे तभी के तभी भेजना पड़ेगा। सो इसके लिए एक ईमेल स्टूडियो नाम की चीज होती है। आप द हेल्प ऑफ दिस ईमेल स्टूडियो, और प्रॉब्लम निकिता इज सेइंग 500, तो इट कुड बी, बट मुझे इतना तो पता है कि ज्यादा नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, आप सही हो। सो यू नो ईमेल स्टूडियो नाम से एक क्लाउड होता था पहले, अभी भी है इनफैक्ट, बट दिस एटलीस्ट यू कुड, यू नो, 5 मिलियन तो भी आप एक ही बार में भेज सकते हैं। 5 मिलियन जो है वो आप एक ही बार में भेज सकते हैं, इतना ज्यादा भेज सकते हैं आप एक। देन मोबाइल स्टूडियोज होते हैं, जो कॉल्स आते हैं हमको, रिकॉर्डेड कॉल्स हम सुनते हैं, चुनाव के आसपास अपने यहाँ पर आते हैं, चुनाव होता है तो किसी का रिकॉर्डेड कॉल आप सुनते हो, है ना, तो ये जनरली वो होता है। एसएमएस स्टूडियो, आज तो एसएमएस कोई नहीं करता, बट खैर खैर एक दौर था जहाँ एसएमएस वाज द कम्युनिकेशन का चैनल होता था। और मुझे नहीं पता आप लोग ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन हम लोग एसएमएस पैक डलवाया करते थे पहले, 10 रुपए में 1,000 एसएमएस, 10 रुपए में 100 एसएमएस, एंड वी यूज्ड टू हैव दिस चैटिंग, वो कम्युनिकेशन जितना भी आगे व्हाट्सएप पे हो जाता है, वी यूज्ड टू हैव दिस विद द एसएमएस। तो एसएमएस का भी अपना एक दौर था, एसएमएस से भी एडवर्टीजमेंट्स किए जाते थे काफी सारे, आज भी तो एसएमएस आते हैं आपको एडवर्टीजमेंट्स के। तो एसएमएस स्टूडियो, अगर इफ यू वांटेड टू सेंड वन ऑफ द एसएमएस टू थाउजेंड्स ऑफ द पीपल इन ओनली सिंगल स्नैपशॉट, इन अ सिंगल शॉट, we go for the SMS studios. Social studios and journey builder. These are the two things that has been recently added. That has been recently added. ये कुछ ऐसी चीजें जो अभी अभी ऐड। So social studio आपको पता होगा, if you want to have the advertisement for this you know on this social media, like, you know, website, Instagram, whatever, then you could go for the social studio. Social studio में थोड़ा part Einstein का भी आ जाता है। Journey builder is also some of the things, उसमें कुछ components Einstein के आते हैं। Okay? So these are few things actually that is there inside the marketing cloud. अब इसमें कुछ नए फीचर्स और ऐड हुआ। Importantly is what कि marketing cloud पूरा डेवलप नहीं हुआ है, rather exact target नाम का एक प्रोडक्ट था जिसको सेल्सफोर्स ने टेक ओवर किया,
and converted it from the on-premise to on cloud. Cloud पे लाके उसका नाम change किया marketing cloud. And these are the some new features that has been added. Email studio भी होता था उसमें. बाद में उसमें मोबाइल स्टूडियो, SMS स्टूडियो, सोशल स्टूडियो और जर्नी बिल्डर ये recently add हुआ है. These are the things related to that. Okay. So by today I'm stopping it over here. कल मैं आपको यहाँ से आगे continue करवाता हूँ, and by tomorrow we are going to end this as well as releases or the additions अगर हो सका. Days what today's Wednesday. ठीक है, जितना होता है कर. So today I'm going to end up here. Let me stop the